Nothing for nothing. ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ବସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ଚାବି ଆସୁନି। কোন ক্লাস করলি তো ভাঙা ক্লাস করলি তো লগে দি পড়ুন। Oh, I am unmuting you all. Don't disturb in class, okay? I don't put you on mute. Don't come on mute if it is not required. Okay, so we can start now. Time to start. Where are we? Okay, school. So yeah, so a distance hamro pare asla, right? So bartan question diala, next question. Find the quadrant in which the point -2, -3 lies or 3, and find its distance from coordinate axis. This is a new buzzword. This is a new buzzword, right? Buzzword, right? Coordinate axis. Coordinate axis का क्या? Coordinate axis माने axis रू axis, right? Axis रो plural form है ला axis, right? Axis means single. Axis means plural, right? तो good x axis को आ जाए, y axis को आ जाए, axis को या माने means both x axis and y axis. X axis and y axis को आ जाए, combined को आ जाए coordinate axis. Coordinate axis. Coordinate axis. Coordinate axis is defined for both x-axis and y-axis. X-axis और y-axis both को कहा जाए, combined को कहा जाए coordinate axis. Okay. हम क्वेश्चन पत्र जी कोन गोटे पॉइंट दिया हैला -2, -3 सेटा को क्वाड्रेंट रे रहयो, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट रे रहयो, राइट? और से पॉइंट ता कोऑर्डिनेट एक्सिस मानन को ठारू माने x एक्सिस और y एक्सिस ठारू केते डिस्टेंस रे अछि बाहर करो, राइट? I have a good practice to always draw diagrams in coordinate geometry, so you also learn how to draw the diagrams. Okay, as soon as we will progress in chapters, right, you will also
get habituated on that, and you will also become a master like me on coordinate geometry. So -2, -3. Point at right? Kana, don't disturb. It's class time. So I will draw a perpendicular on x-axis. This is x-axis, right? This is y-axis, and this is origin. Origin is always denoted by O, right? So I will draw a perpendicular to x-axis. X-axis perpendicular draw kale am pauje y coordinate. X-axis perpendicular draw kale am kom pauje y coordinate. Yes. Anyone has any concerns? Okay, root 53. Someone has answered. Okay, sorry, I saw right now. Yeah, Techno E15 Pro. Who is this? Change your name, please, first. Then ask questions. So, जदि मैं x-axis प्रति लंब काटिबी ताले y coordinate आसो. Y coordinate केते -3. Coordinate टा -3. But I have asked you at what distance, right? तमे मोर पछरे छिडा हो कि आगे छिडा हो. मु डिस्टेंस पचाले मु पछरे अछले -3 डिस्टेंस कहबी कि नाही. आगे पछरे +3 डिस्टेंस कहबी कि नाही. Distance is always positive. So you should not write that the point -2, -3 is at a -2 distance from x-axis. No. Sorry, -3 distance from x-axis. No, distance is always positive. Since distance is always positive, and the point lies on third quadrant by Q3, third quadrant by Q3. So it is at a distance of 3 units from x-axis and 2 units from y-axis. कहीं भले से coordinate टा -2 -3 हुए, right? But the distance will never be negative, right? So distance is always positive. So distance you have to write always positive value, right? Modulus, right? Now you have to take the modulus of. Modulus means negative to positive. Modulus corner function that we will learn in graph. Okay, so if I will teach you, then definitely I will teach those things as well. Okay, modulus means lekha jay kinti -2 ro modulus. This is modulus. Modulus means -2 ro modulus 2 +2 ro modulus be 2. This is modulus. Sign of modulus. Okay, so forget that. बस आमे देखले जे खाली पॉजिटिव वैल्यू लीव दैट मॉडुलस बाहर में जाएगा मॉडुलस ना झाड़ पे जाए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट तो जानिए गोटे पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस रे बा कार्टेशियन प्लेन रे किंतु अच्छा गुड थिंग सपोज वन मोर थिंग it point x y h right definitely ये पॉइंट x एक्सिस थारु किछि गोटे डिस्टेंस रछ केते डिस्टेंस ता y काई पॉइंट x y एटा x पॉइंट जदी x y हला y एक्सिस रु से x एक्सिस रु y डिस्टेंस y एक्सिस रु x डिस्टेंस रहबो राइट मु पॉइंट आउट खसके तळु तळु खिची झिकी तळु तळु पॉइंट आउट एठी के आनी ए डिस्टेंस चेंज होनी किंतु y कमी कमी जाउछ राइट आउट ये झिकी ए डिस्टेंस चेंज होनी किंतु y टा आउट ये कमी गला आउट ये तळु झिकी राइट x कमुनी y कमुछ आउट ये झिकी x कमुनी y कमुछ जेतळ झिकी झिकी म आनी गिरी ताको दंडा कर देई एठे पके देई ए पॉइंट टा रो कोऑर्डिनेट मागी छी
ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट मागिची मींस ए पॉइंट टा x एक्सिस रु केते डिस्टेंस रे अछि x एक्सिस ऊपर पड़ जाई राइट x एक्सिस ऊपर पड़ जाई तो डिस्टेंस टा केते हला 0 x एक्सिस प्रति डिस्टेंस काइले हम पाउचे कोन y कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट हला 0 पॉइंट रो पोजीशन किन काउचे पॉइंट टा किन काउचे पॉइंट टा x एक्सिस रु केते डिस्टेंस रे अछि y एक्सिस रु केते डिस्टेंस रे अछि x एक्सिस रु जेते डिस्टेंस रहउची दैट इज y कोऑर्डिनेट x एक्सिस ऊपर जेहेतु पड़ी गला ये x 0 डिस्टेंस रे अछि तो y कोऑर्डिनेट इज 0 राइट बर्तन y एक्सिस प्रति लंब काटी एटा डिस्टेंस टा केते x जदि ये डिस्टेंस टा x हैला ताले ए पॉइंट हला x राइट ताथ ए लाइन ऊपर बा एटा कोन लाइन टा कोन x एक्सिस ए लाइन ऊपर जे कोनसी जगह में गोटे पॉइंट नेबी जे कोनसी जगह पॉइंट नेबी आगर हो पछर हो कोड होजु तार y कोऑर्डिनेट टा सब बेले 0 काहेकि गोटे पॉइंट रो कोऑर्डिनेट काढुचे x एक्सिस प्रति लंब काटिले y कोऑर्डिनेट पाउते जेहेतु पॉइंट टा x एक्सिस ऊपर रहला सी x एक्सिस टारू 0 डिस्टेंस रहला तो y कोऑर्डिनेट टा 0 होला x एक्सिस रो जेते डिस्टेंस रहबो दैट इज his sorry y axis रो जेते डिस्टेंस रहबो दैट इज his x कोऑर्डिनेट राइट तो जदि एटा x हला एति जदि एटा जदि 5 हेइ थांदा ए डिस्टेंस टा तारे दिस इज 5,0 जदि 8 पॉइंट आनली एटा जदि -5 हला this point is -5,0 see here don't do this mistake this is 5,0 because just we have learned distance this is not distance this is about point distance means positive point means say x coordinate positive हो पारे नेगेटिव हो पारे दीड जा नेगेटिव हो पारे x coordinate y x ता थेडा हम कोन जानले जदी गोटे पॉइंट x एक्सिस ऊपर रहउची डेफिनेटली तार y कोऑर्डिनेट सब बेले 0 तार y कोऑर्डिनेट सब बेले 0 जदी पॉइंट 8 रहला राइट जदी पॉइंट 8 रहला हे पॉइंट ता x एक्सिस तार के दूर रे अछि 0 डिस्टेंस रे y एक्सिस तार के डिस्टेंस रे अछि 0 डिस्टेंस रे ओरिजिन दा x एक्सिस तार 0 डिस्टेंस अछि y एक्सिस टू b 0 डिस्टेंस अछि तेनु करी ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट 0 0 because this point lies on both x axis and y axis जदि x axis प्रति लंब काटी ता लेंथ आसो 0 जदि y axis प्रति लंब काटी ता लेंथ आसो 0 तेनु करी आर x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 तो ओरिजिन रो कोऑर्डिनेट हला सब बेले 0 तीनटा जिंस हम सिखले सिमिलरली जदि पॉइंट ता 8 रहइबो जदि पॉइंट ता 8 रहइबो 8 y एक्सिस प्रति लेंथ काटी y एक्सिस प्रति लेंथ माने y एक्सिस ऊपर रहला तो y एक्सिस प्रति लंब काटिले हमको x कोऑर्डिनेट दोची से लेंथ रा केते 0 y एक्सिस ऊपर जेहेतु रहला y एक्सिस ऊपर जेहेतु रहला y एक्सिस प्रति लंब काटिले 0 आसी और y एक्सिस की लंब काटिले जहा पाउचे दैट इज x कोऑर्डिनेट so its x coordinate is 0 y coordinate is whatever y if it is y then it is y so 0 comma y right so जदि 8 रहला पॉइंट ता 0 -y जदि 8 रहबो पॉइंट ता 0 sorry -x 0 -x 0 लेंथ जदि x हैला ताले -x I think you are clear what about the points positions quadrants the first quadrant रहइबो कोन हो सेकंड क्वाड्रेंट रहइबो कोन हो थर्ड क्वाड्रेंट रहले कोन हो फोर्थ क्वाड्रेंट रहले कोन हो x एक्सिस रो पॉजिटिव साइड रहले कोन हो x एक्सिस रो नेगेटिव साइड रहले कोन हो x एक्सिस ऊपर रहले कोन हो ओरिजिन ऊपर रहले कोन हो y एक्सिस ऊपर रहले कोन हो y एक्सिस रो पॉजिटिव साइड रहले कोन हो y एक्सिस रो नेगेटिव साइड रहले कोन हो we got all this
clarifications, right? So we'll note down these things. The coordinate of origin is 0, 0 because it is at a distance of 0 unit from x-axis as well as y-axis. If a point lies on x-axis, then its y-coordinate is always 0. Is always 0, right? If सुंदर नोट टे कर दो भितर गोटे आउट नोट सब नोट गोटे if the point is x comma 0, then it is at a distance of x, so modulus from origin. Origin ru kete distance रे पचारला, right? Origin ru kete distance रे पचारला. जदि point right रहा, suppose this is 5, 0. Eta origin 0, 0. Anko distance ta kete ho? 5, right? That I have told you. जदि point ta origin ru, जदि point ta 5, 0 हला, ताले definitely say origin ru 5, 0, 5 distance रहा. If the point is minus 5, 0, then it is at a distance of 5 from origin. From origin, right? Distance ta negative one, right? Minus 5, 0 could assume it. This is minus 5, 0, right? तो ये distance का भी negative होगा नहीं. Point ta positive negative चिंता करिया. Distance का भी negative होगा, right? तो origin नु कितना distance रहा? 5 distance रहा, right? If the point is 0, 5 or 0, minus 5, then it lies on y-axis at a distance 5 from origin. Clear? I hope you are clear, right? So the y-axis super right? It 0, 5, 8 row, 8 row, 0, minus 5. So this distance is always 5. The origin, right? Origin to get the distance one negative to rayoni, so positive. Okay. Got it? Okay, we'll do something. Some start today, and next class we will learn in detail. So next time coordinate of origin is 0. If a point lies on the x-axis, then its y coordinate is always 0. If a point lies on y-axis, is x coordinate. Lucky chart either garam is always 0. That is 0, x, 0, y. 0, y right?
तो y x origin केते डिस्टेंस होइला and at a distance of mod y from origin mod ର काम कोन से नेगेटिव थिले भी पॉजिटिव कर दो एग्जैक्ट डेफिनेशन से या नो जेहेतु आम ज्योमेट्री पढ़ुचे मो कैलकुलस को आउत भितर को आणुनी जेतल दरकार पड़े क्वाड क्वाड जीवा हम जाननी किंतु एबे आणुनी हला right if a point lies on y axis then its x coordinate is 0 always 0 that is 0 comma y and at a distance of mod y from origin right then बर्तमान हम देखिए पॉइंट तो जान देले राइट बर्तमान डिस्टेंस दी जणो भीतर डिस्टेंस किन काढिया राइट सपोज this is last we will stop class okay suppose it would point diala x1 y1 this is another point x2 y2 right एदरा पॉइंट भीतर डिस्टेंस केते हम एदरा पॉइंट भीतर हमें डिस्टेंस केते हमें बाहर करिया राइट तो आमे तो जानि छ गोटे जिंस कोन करी मु प्रथमे फटकिना कोन करी पॉइंट दिया आइछि माने मु समस्त मु पाखे x एक्सिस प्रति y एक्सिस प्रति सब लंब काट दी आपको लंब काट दी इठवा तीन लंब काट दी इठवा को लंब काट दी इठवा तीन लंब काट दी राइट so this is y2 this length is y2 right this length is y2 काहेकि x एक्सिस प्रति लंब काटले तो y कोऑर्डिनेट पाउछे एटा का प्रति लंब काटछे y एक्सिस प्रति लंब काटछे तो x कोऑर्डिनेट पाइबा this is x1 this length is x2 right yes काहे गलु रे आइला तमे तो अनम्यूट अछि तू मामा इम तो ऊपर बसले किन पाठ पढी जा 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 चला मा तमे अनम्यूट अछि नाही मो अनम्यूट नाही जा एक वर्ड हम पाठ पढू डिस्टर्ब कर okay so this length this total length is x2 right this total length is x2 so this length is x1 right so this length is x2 minus x1 this length is this minus this right this length minus this length right जदि एटा p हला एटा जदि q हला एटा जदि m हला एटा जदि m हला एटा जदि m डैश हला एटा जदि n हला एटा जदि n डैश हला ताहले n एटा जदि o तो एट रहबो एटा जदि r हला राइट एटा जदि r हला तो nr होले केते पहिले nq minus nr नहीं रे भूलभाल कर देली nr नहीं qr is equal to nq minus nr right nq केते nq ला आसला हमरो x2 पूराटा x2 राइट पूराटा केते x2 minus एथि केते x1 x2 minus x1 तो इठु हमरा आसला पळे आसला केते x2 minus x1 कोडा qr प्लस ला x2 minus x1 सिमिलरली एटा केते आसीओ this is y2 this length is y1 so this length is y2 minus y1 so this length also y2 minus y1 right ए length केते आसला देखा जाऊ मुझे कटिगला रे बाबा
टिके रो रे नेट कटिला बोधे नेट तो अच्छी कनेक्शन कटिला मिररिंग होनी रे sorry guys, this is y2 minus this length is this length minus this length, right? So this length is y1, this length is y2, this length is y2, right? This length is y2, so this length is y2, right? So this length is this length minus this length, so this is y1 minus y2, right? तो फाइनली हमर वो ट्रायंगल आसला देखा जाउनी रे देखा जाउनी रे बिले गाइस देखा सर नहीं देखा सर देखा सर ट्रायंगल काटले देखा जाउची नो सर देखा जाओ नो सर हां बे देखा जाउनी कथि जाउची बारंबार हो ठीक है हम नेक्स्ट क्लास रे करिया हला डिस्टेंस बार करिया ओके यस सर यस सर Thank you, sir. बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू सर